Well, hello and a very warm welcome to the KickNext YouTube channel. I am right here outside the Wankhede Stadium. I was here for the Mumbai Indians versus Lucknow Super Giants pre-match. दोनों टीम्स का आखिरी मैच है. कल यहाँ पर वो मैच होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम में. और मुंबई इंडियंस एट द बॉटम ऑफ द टेबल. देयर इज नॉट मच टू प्ले फॉर देम. नमन धीर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, ही सेड दैट वी हैव आवर प्राइड टू प्ले फॉर. तो वो प्राइड के लिए खेलेंगे. बट एलएसजी के लिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. दे आर although officially they are not yet knocked out of the tournament, as Mumbai Indians have been knocked out of the tournament officially. LSG अभी भी contention में है playoff spot के लिए. But the thing here is that they are on the 12 point mark और वो मैच जीतेंगे ये वाला तो वो 14 पे आएंगे. अब 14 पे SRH ऑलरेडी है, CSK ऑलरेडी है, RCB जीतती है तो वो भी 14 पे आएगी. लेकिन SRH के दो मैच अभी बाकी हैं. SRH अगर अपना मैच जीतती है तो SRH will go to 16 and they will qualify. And if CSK wins their match against RCB on Saturday, they'll also go to 16. Whereas if RCB wins, they'll reach 14. But the issue with LSG is that they don't have a good net run rate. अगर LSG ये मैच जीतती भी है ना तो उनका नेट रन रेट इतना नीचे है RCB और CSK से कि अगर CSK जीतेगी obviously they'll qualify on the point basis. But then again, if RCB wins with a good margin, they'll also reach to the 14 point mark and they will obviously have a much better run rate than the Lucknow Super Giants. So Lucknow is more or less out of the tournament. Officially they have not been knocked out. They are still in contention, but it's far from possible for them to qualify from here. Lance Kruzner आए थे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से. He talked about certain points, how the team couldn't stand up during the crucial junctures, and talking about the Sanjeev Goenka and KL Rahul incident. He said that we have given enough statements about that incident now and we'll not like to talk more. बहुत कुछ कहा गया वो संजीव गोयनका और केएल राहुल की जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में. बट एलएसजी हैज़ ऑब्वियसली एज अ टीम मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन देयर लास्ट IPL 2024 गेम. दोनों टीम्स का जैसे कि मैंने कहा आखिरी मैच है. नेट सेशन हो रहा था. सूर्य कुमार यादव डिड सम बैटिंग प्रैक्टिस, ईशान किशन डिड सम बैटिंग प्रैक्टिस, नमन धीर जो पीसी के लिए आए थे उन्होंने भी बैटिंग प्रैक्टिस की. इस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने काफ़ी प्रैक्टिस की, लंबे छक्के मारे स्टैंड्स में. एंड Ravi Bishnoi was seen bowling in the nets. So both the teams they did their preparations. रोहित शर्मा जो यूजुअली करते हैं, रोहित शर्मा हर मैच से पहले यहाँ स्पेशली वानखेड़े में there's this one एरिया ऑफ द बाउंड्री जहाँ पे वो स्प्रिंट्स करते हैं. वो अपने ट्रेनर के साथ वो रन्स करते हैं. ट्रेनर अपनी घड़ी में मार्क करते हैं टाइमिंग. there's a particular drill that he does before every match and he did that today as well. Mumbai is looking good as always. Ishaq Kishan in the nets, he always looks good in the nets. So लंबे शॉट्स मारना, नॉकिंग करना. बट मुंबई अगेन दे हैव only their pride to play for. They have been horrible this season and they are desperately looking to end this season on a high with a win with 10 points. They are on 8 points in their 13 games so far and they would want to somehow gift their win to their fans also, because the stadium has more or less been jam-packed for every match at Wankhede this season. The MI Paltan, as they call him, have bagged their team through thick and thin and they will be here tomorrow as well. They'll fill the stadium. They will support their men in blue of IPL and this is the last game at the Wankhede Stadium. मुंबई शहर में जब क्रिकेट होता है ना तो वो पूरा मुंबई आसपास स्पेशली वानखेड़े के सज जाता है. So this area also, Marine Drive area, will also be crowded tomorrow and KickNext will be there to give you all such updates about the match. So do tune into the KickNext YouTube channel, subscribe our YouTube channel, hit the bell icon, follow us across social media platforms and we'll keep bringing you updates live from the stadium itself. We'll be there tomorrow. Taus Rizvi भी होंगे मेरे साथ. We'll do a pre-match, we'll discuss and after the match also we'll discuss how did the match go, कौन जीता कौन हारा, कैसे रहा मैच. But Wankhede is all decked up for its last IPL game and we'll have to wait and see which team ends their season with a high tomorrow. Until then, please take care of yourself and enjoy the Indian Premier League season 2024.